Good morning to all of you. So, dear students, we we will start with chapter water. Okay. So, when you think of water, what images come to your mind? If you see the water, what are you thinking? Okay. And if you think like children loves to float paper boats in a rain puddles. Okay. And by noon the puddles when vanish, where does the water go? So it is a important thing, or you know that water is a life for human being and animals and plants also. So as you know that sun heats causes evaporation of water into vapor. Got it? And when the water vapor cools down, it condenses and forms cloud. From there is it may falls on the land or sea in the form of rain. So as you see that this is a water cycle. Okay. So our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. So as you can see that this is the cycle of water. Got it? So if you see that there is at first evaporation, condensation, precipitation, रनिंग ऑफ एंड एवोपरेशन। तो ये जो वाटर की साइकिल है ये हमेशा ऐसी चलती है। गॉट इट? सो द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, ponds, springs and glaciers. As you know that there are many water बहुत सारे वाटर के सोर्सेज हैं that you can see like river, ponds, wells. ठीक है? This is a naturally sources, nature के sources हैं, and the ocean bodies and the seas contain salty water. So the water of the ocean is salty or saline as it contains large. So as you know the water is salty in the oceans and ocean basins, and second thing the rivers there is a sweet water. ठीक है? So as you can see this is the 71% of the water and only 29% of the land in the earth. Okay. So there is a salty water also. So as you can see that distribution of water bodies like oceans जो हैं 97.3%, ice caps 0.2, ground water 0.68. Okay. And फ्रेश वाटर लेक्स 0.009, सॉल्टी लेक्स इतना। ठीक है? रिवर से ये तो 100% क्या है, रिवर 0.001% है। सो एज यू नो फ्रेश वाटर में हमारे पास एक तो ग्राउंड वाटर आता है, सेकेंड फ्रेश वाटर लेक्स हैं, आइसलैंड सीज, सॉल्ट लेक्स एंड एटमॉस्फेयर एंड रिवर। सो यू नो कि 97% ऑफ सैलिन वाटर है that we can't drink. Okay. So it is important to save water. Then everyone says that save water, save water. So you have to think about it ki how should we save water, and how could we uh, make a good thinking about the saving water, because of it is important part of our life. Okay. So as you know कि water is absolutely essential for survival, and water alone can quench our thirst when we are thirsty. So you know कि it is important for plants, humans and animal being. So so if you see this is the paper में you can see there is a paper cutting water, the water you drink. Okay, a drop of life, many major rivers in the danger of drying out, Ganga among 10 dying rivers. So you know this is the particular
थिंग अबाउट वाटर, ठीक है। तो ये वाटर के बाद है, वाटर की बात है बिकॉज ऑफ कि इट इज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अभी की जनरेशन्स इसको यूज कर रही हैं, आगे वाली जनरेशन्स की भी इसको सही तरीके से यूज कर सकें, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, सो ओशन सर्कुलेशन, लेट वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। सो कि देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर feet on the seashore, and if you go the sea areas, so you can feel it, and the wet sand on the beach, the cool breeze and the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of the waves. So you can see everything is fascinating, unlike the calm water of ponds and lakes. So sometimes it is very like feeling happily thinking, and when you will go that is areas, so it is you can you, you will feel happy, and sometimes it is ocean circulation, like ये कभी कभी tide और wave से it is uh, looking like a dangerous thing, ठीक है। सो मार्च का इफ़ यू सी द 22 मार्च 22 देयर इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाटर डे when the need to conserve water is reinforced in different ways. Okay, so waves, if you know, the waves are formed when winds scrape across the ocean surface. So the stronger the wind blows and the bigger the wave becomes. So कि waves जो हैं, अगर आप देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, सो क्या होता है, पानी ऊपर की ओर आता है, होता है, and it is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves, and कि वो क्या होती हैं, उसकी जो वेव्स होती हैं वो फैलती हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल सा एक छोटा सा कण भी डालो और एक छोटा सा स्टोन भी डालोगे तो ऐसा होता है। एंड when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves। तो उसी क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। देखो ये देखो पत्थरों से टकरा रही है तो क्या हो रही है, वो उछल रही हैं, ठीक है, दे आर जंपिंग, ठीक है। सो ड्यूरिंग अ स्ट्रॉम द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वार वेव्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्ट्रॉम में क्या होता है कि वो उसको बहुत तेज़ी से स्टोन पे क्या करता है, बहुत तेज़ी से उसे टकराता है। एंड व्हेन दे वर स्ट्रक, सो वेव्स क्या होती हैं और अपना जो रूप है वो और भयंकर कर लेती हैं, ठीक है, और डेंजरस हो जाती हैं। सो दीज मे कॉज ट्रमेंडियस डिस्ट्रक्शन। So an earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amount of ocean water. So as a result, a huge tidal wave called tsunami. So as you know, ये टी लिखा है बट टी इज अ साइलेंट, ठीक है। तो कि ये अमाउंट पे ह्यूज वाटर इन ओशन वाटर पे जब ये होता है तो जब टिंडल ह्यूज टिंडल वेव होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सो दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इन फॉर्म एंड 150 मीटर ये तक ये जाता है, ठीक है। एंड दीज वेव्स ट्रेवल एट स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर। तो खुद सोचो कि 700 किलोमीटर की स्पीड से अगर कोई आ रही है, हम लोग एक चीज़ सुनो, हम लोग जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, 50 या 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस वही स्पीड कितनी तेज़ होती है देखा। बट 700 किलोमीटर की स्पीड से कोई अगर किससे स्ट्रक करेगा तो यू कैन थिंक कि कितना हार्म हो सकता है। सो इफ़ यू नो दैट 2004 के देयर इज़ अ डैमेज इन अ कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, ठीक है। सुनामी जो है, इट इज़ अ जापानीज वर्ड एंड दैट मीन्स हार्बर वेव्स एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉय व्हेन एवर देयर इज सुनामी। ओके, सो दिस इज अ सुनामी एंड अर्थ इज 2004 की डिज़ास्टर में बहुत ही एशिया में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। ओके, एंड ओके, सो आई विल टेल यू अनदर tides and the other topic in a next video. Okay.